सदस्यों में अनुशासन की धारा 30 के अंतर्गत कोई निष्कासित सदस्य पुनः प्रवेश से पहले 1 वर्ष की तुलना में अब उसके 3 वर्ष तक वो अयोग्य रहेगा। समता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए धारा 41 के अंतर्गत बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीट हमने आरक्षित करने का काम किया है। और केवल महिलाओं के लिए नहीं, हमने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 सीट का हमने आरक्षित प्रोविजन करने का काम किया है। धारा 41-57वां संविधान संशोधन करने का इसमें प्रावधान है। साथ ही महोदय, बोर्ड का सदस्य बनने में योग्यता धारा 43 के अंतर्गत ऐसे सदस्य जिसकी इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के तहत वसूली के बकाया हो या किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति के अपक्रमण का जिम्मेदार निदेशक हो, अब वो व्यक्ति किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति का निदेशक बनने के लिए अयोग्य रहेगा। इसी तरह कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता धारा 49(2)E का भी प्रावधान किया है। इसमें भर्ती नीति के लिए मानकीकरण निर्धारित होंगे, जिससे भर्तियों में भाई भतीजावाद और पक्षपात दूर करने में मदद हमको मिलेगी। अभी हमारे सदस्य महोदय ने कहा था रिलेशनशिप की, तो मैं कहूँगा कि हमने आपकी उसमें चिंता कर ली है और उसमें आपके खंड 15 में सब क्लॉज 6 में स्पष्टीकरण में नातेदार की जो परिभाषा दी गई है, इसमें इसलिए कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कर्मचारियों की भर्ती में की प्रक्रिया में पारदर्शिता धारा 49(2)E का प्रावधान किया है। इसमें भाई भतीजावाद पक्षपात दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ कार्यकारी समितियों से बेहतर शासन सुनिश्चित धारा 53 बोर्ड द्वारा कार्यकारी समिति या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति के उपनियमों के अनुसार समितियों और उपसमितियों का गठन भी करेंगे। ऑडिट एंड एथिक्स समिति का गठन भी इसमें रहेगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तथा डिसिप्लिन केंद्रीय पंचायत द्वारा पैनल से ऑडिटर की नियुक्ति धारा 70(2)(3)A के तहत प्रावधान किया है, जिसमें केंद्रीय पंचायत द्वारा स्वीकृत पैनल से ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी समितियों के ऑडिट रिपोर्ट को संसद में रखा जाएगा। संशोधित प्रावधान से ऑडिट और अकाउंटिंग में अनुशासन पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑडिट और अकाउंटिंग के निर्धारित मानक के प्रावधान से पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन धारा 73 में इसका प्रावधान रहेगा। जो जब तक ऐसे मानकों का निर्धारण न हो जाता, तब तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के मानक ही मानक होंगे। सहकारी बैंकों को RBI के मानकों को अपनाना होगा। इससे ऑडिटिंग में एकरूपता सुनिश्चित होगी, जिससे पारदर्शिता वित्तीय अनुशासन भी होगा। सदस्यों को तो इस तरह से इसमें सारे प्रावधान हमने किए हैं। और मैं कहूँगा कि अंत में 2 विषय अपने कहते हुए अपनी बात को पूरा करूँगा। इसमें जो हमारे साथी सांसदों ने सुझाव दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ इस कोऑपरेटिव में टैक्स से संबंधित बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो सहकारिता को बढ़ने में अवरोध पैदा करते थे। तो हमने टैक्स की सभी रियायतों को उनको ठीक करने का काम किया है। हमने रियायतों को या तो टैक्स को खत्म करने का काम किया है या टैक्स को घटाने का काम किया है। मैं एक चीज को बताऊंगा तो शायद विस्तार से आपको देर लगेगी। चीनी मिल का जिस तरह से आपने जिक्र किया, चीनी मिलों का, उसमें 10,000 करोड़ तक का सीधा रियायत हमने उसमें देने का काम किया है। इसी तरह से बैंकिंग के क्षेत्र में जो निकासी पर हमको टैक्स देना पड़ता था, उसको या तो हमने खत्म किया है या हमने कम करने का काम किया है। और साथ ही साथ हमने निकासी पर उनकी निकासी की लिमिट भी बढ़ाने का काम किया है। 1 करोड़ से 3 करोड़ किया है और हमने 20,000 से 2 लाख करने का काम किया है। मैं अपनी विस्तार से चर्चा न करता हुआ लगातार जिस तरह से हमने हर क्षेत्र में काम किया है, तब मैं कह सकता हूं कि मैं अंत में आप सबसे निवेदन करता हुआ इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन, जो हमारा संशोधन बिल है, इससे बहुत बड़े लाभ होने वाले हैं। और सहकारिता को जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उस दिशा में सहकारिता इसके माध्यम से चलेगी। और सहकार से समृद्धि का विजन और साथ ही साथ सहकारिता आंदोलन जमीनी स्तर तक और हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का जो विचार माननीय प्रधानमंत्री का है, वो पूरा करने का काम करेंगे। अंत में महोदय से मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। I shall first put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote
The question is that the bill further to amend the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: माननीय श्री विकास रंजन भट्टाचार्य, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री एलामारम करीम, श्री जोस के मनी, श्री ए रहीम, श्री तिरुचि शिवा, Dr. V. Sivadasan, with instructions to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. The question is that the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 1 by Dr. A.D. Singh, number 24 and 25 by Dr. John Britas. Mr. A.D. Singh, not present. Dr. John Britas, not present. Members absent. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 2 by Sri A.D. Singh, number 26 by Dr. John Britas. Mr. A.D. Singh, absent. Dr. John Britas, absent. Members absent. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clauses 4 and 5 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 4 and 5 are adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 16 by Sri Elamaram Karim, number 22 by Sri A. Rahim, number 27 by Dr. John Britas. Members absent. Sri Elamaram Karim absent. Sri A. Rahim absent. Dr. John Britas absent. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Please, शांति बनाए रखें. Clause 7 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment. Number 28 by Dr. John Britas. Member absent. Dr. John Britas, not present. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There is one amendment, number 29 by Dr. John Britas. Dr. John Britas absent, member absent. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clauses 10 and 11 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 and 11 are adopted. Clause 12 stands part of the bill. There is one amendment. Number 3 by Sri A.D. Singh, absent. Member absent. I shall now put clause 12 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clause 13 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 4 by Sri A.D. Singh, number 17 by Sri Elamaram Karim, number 23 by Sri A. Rahim.
Sri A.D. Singh absent, Sri Elamaram Karim absent, Sri A. Rahim absent, members absent. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 is adopted. Clause 14 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 14 is adopted. Clause 15 stands part of the bill. There are two amendments. Number 18 and 19 by Sri Elamaram Karim. Sri Elamaram Karim absent. Member absent. I shall now put clause 15 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 15 is adopted. Clause 16 stands part of the bill. There is one amendment. Number 5 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. Member absent. I shall now put clause 16 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 is adopted. Clause 17 stands part of the bill. There are three amendments. Number 6 by Sri A.D. Singh. Number 20 by Sri Elamaram Karim. Number 30 by Dr. John Britas. Sri A.D. Singh absent. Sri Elamaram Karim absent. Dr. John Britas absent. Members absent. I shall now put clause 17 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 is adopted. Clause 18 stands part of the bill. There is one amendment. Number 7 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. Member absent. I shall now put clause 18 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 18 is adopted. Clause 19 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 19 is adopted. Clause 20 stands part of the bill. There are three amendments. Number 8 by Sri A.D. Singh. Number 31, 32 by Dr. John Britas. Members absent. Sri A.D. Singh absent. Dr. John Britas absent. I shall now put clause 20 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 is adopted. Clauses 21 and 22 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 21 and 22 are adopted. Clause 23 stands part of the bill. There is one amendment, number 33 by Dr. John Britas. Dr. John Britas absent. Member absent. I shall now put clause 23 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 23 is adopted. Clause 24 stands part of the bill. There are two amendments. Number 9 by Sri A.D. Singh. Number 34 by Dr. John Britas. Sri A.D. Singh absent. Dr. John Britas absent. Members absent. I shall now put clause 24 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 24 is adopted. Clause 25 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 25 is adopted. Clause 26 stands part of the bill. There is one amendment. Number 10 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. I shall now put clause 26 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 26 is adopted. Clauses 27 to 30 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 27 to 30 are adopted. Clause 31 stands part of the bill. There are two amendments. Number 11 by Sri A.D. Singh. Number 21 by Sri Elamaram Karim. Sri A.D. Singh absent.
Sri Elamaram Karim, absent. I shall now put clause 31 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 31 is adopted. Clauses 32 and 33 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 32 and 33 are adopted. Clause 34 stand part of the bill. There is one amendment, number 12 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. I shall now put clause 34 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 34 is adopted. Clauses 35 to 45 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 35 to 45 are adopted. Clause 46 stands part of the bill. There is one amendment, number 13 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. Member absent. I shall now put clause 46 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 46 is adopted. Clause 47 stands part of the bill. There is one amendment, number 14 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. I shall now put clause 47 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 47 is adopted. Clause 48 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 48 is adopted. Clause 49 stands part of the bill. There is one amendment, number 15 by Sri A.D. Singh. Sri A.D. Singh absent. I shall now put clause 49 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 49 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Honorable Minister Sri V.L. Verma to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पास किया जाए. Passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now the Mediation Bill 2021. Honorable Sri Arjun Meghwal ji to move a motion for consideration of the Mediation Bill 2021. Honorable Deputy Chairman, sir, with your permission, I move that the bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes, commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators, to encourage community mediation and to make online mediation as acceptable and cost-effective process, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. कुछ बोलना चाहेंगे माननीय? मैं चाहता हूं कि सदस्य बोल जाएंगे उसके बाद ही. धन्यवाद. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Amar Patnaik, Honorable Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir. Sir, I would have been belonging to the legal fraternity. I would have been very happy had other legal luminaries from the vacant benches would have been present here to listen to this deliberation. So mediation as a form of dispute resolution has always been there. It was a part of the Code of Civil Procedure 1908.
Arbitration and Conciliation Act 1996, Companies Act 2013, Commercial Courts Act 2015, Consumer Protection Act 2019, in the Hindu Marriage Act. So the concept of mediation was always there. But what is so significant about this bill, and I feel privileged to be speaking on this, is that there was no standalone mediation bill in this country, and this is the first such bill after independence which is being introduced in the House. So it is my privilege to be speaking on this bill, particularly belonging to the legal fraternity. So the point here is, in 1908, the Code of Civil Procedure was there. But why this culture of mediation was not there in our country? Why this was not happening, even if so many bills were there? And why the need for a separate bill? So there are 5 basic reasons for it. So the basic reasons were that the judges didn't always refer cases for mediation, even though they accepted that this culture is very necessary for removing pendency in our courts. In our courts, for example, sir, now approximately 5 crore cases are pending. So mediation, alternate dispute resolution mechanism, is an effective way. But the judges, for example, in Delhi High Court, only 2.6% of the total number of cases in the High Court were referred for mediation. The second point was there was a lack of clarity on enforceability, whether the mediated settlement would be enforceable in the court of law. The third point was there were some myths associated. The myths were, for example, that mediation is a lesser form of justice. Unless you go and get a judgment from the court, it will not be accepted as a great piece of judgment. The fourth point was that even the lawyers, they were not incentivized to get cases referred to mediation to settle the cases. Now, because of these factors, I think the current bill addresses many of these issues, and I feel this will be a standalone, significant legislation for the country, and this will go a long way in improving the ease of doing business in this country. It will also solve a number of problems of pendency in the lower courts, particularly for people who belong to the disadvantaged section, people who are poor, people who can't afford. So the unique thing about this bill, as the bill suggests, is to promote and facilitate mediation, particularly institutionalize the process of mediation. So institutional mediation, community mediation, online mediation, all these have been enabled in this particular piece of legislation. And therefore, it is a very significant piece of legislation. Now I'll come to some of the provisions of the bill, sir, point by point, and make suggestions to the Honorable Minister who is present here, in case we can actually incorporate some Section 28(2) of the bill states that mediated settlement agreements shall be enforced in the same manner as if it were a judgment or a decree passed by the court. Now, this basically means that even if you win a case in India against an international, there is a person who is your litigant, you will not have the advantage of worldwide global enforceability. You have done so much, you might win the case, but for enforceability, you will not be able to take advantage of the Singapore Convention. So why to unnecessarily have this particular provision? Be in compliance with the Singapore Convention, in which case our people will tend to get the benefit. Those who win against an international opponent in our country, they will be able to enforce it globally. They will not be prevented by our own legislation from going to taking advantage of the Singapore Convention. Now I'll come to the second point relating to the definition itself. Now, on the definition of mediation, which is there in section 4,
I see that, it is a very wide, expansive definition. I completely support. And there is a word there, conciliation. People believe conciliation is a separate process. But I think the bill has done right, the government has done right by including conciliation, because the Supreme Court has now held in the Efflon's judgment that both mediation and conciliation can be put on the same footing. So I think this is a good piece of definition that is there provided in the bill. The second point that I wanted to make is about, the confidentiality clause for online mediation. The confidentiality clause has been provided. It is at the heart of the entire mediation process, but for violation of confidentiality, the penalties and offences on either the mediators or anybody is not prescribed. I think this could be provided in the rules. There is no certainty, there is no provision for enforcing certain international mediated settlements. For example, if an Indian person is going through a process against an international opponent in a foreign soil, where does he get it? Because you are already precluding the possibility of global enforceability by having that provision in which the Singapore Convention advantage cannot be taken care of. There is a point I want to make relating to composite reference mediation. Sometimes out of a contract, several sub-agreements happen. Each one of them might get into a separate mediation process. If you allow each one of them to go through the entire process, then you will be unnecessarily wasting time. So a provision could probably be made in which the concept of composite reference mediation in the Mediation Rules 2021 could be brought in. The provision, in the bill, there is a provision which says that the Act will not apply to pending proceedings. When the pendency is already huge, and this particular Act brings in the element of enforceability of the mediated settlement, why not apply it to the previous cases? Because in such cases, there will be seriousness that the government would be showing. The another point is relating to community mediation. In community mediation, the option has been left to the SDM to decide. But I think in community mediation, just like our sarpanches used to do in Punch in the earlier times, I think it should be made mandatory for the SDM to involve the community leaders, in which case the mediation would be more successful. Mediation will be accepted by both the parties. It will be more having the more force of law, in the sense the local community people are also supporting it. So make it mandatory for the SDM. There is a provision which is relating to requiring central government approval before issuing regulations. Now, in the Bar Council of India regulation Act, and in the National Medical Commission, which was passed recently, there is no such requirement. In professional kind of jobs or professional services, I think this kind of reference back to the central government each time may delay the process. However, I commend the government for reducing it from 180 days, 6 months plus another 6 months, to only 6 months. I think this is very admirable. The last point which I wanted to make is something on which the standing committee has taken a view which is different from the original bill. The government has accepted the standing committee's view, but I would like to support the government's previous view, which was to make the pre-litigation mediation mandatory in phases. If you look at Justice Ramana's first speech in the Singapore-India Mediation Summit 2021, he says that mediation should be made mandatory as the first step for dispute resolution, and a law should be framed in this regard. The government in its wisdom had brought it. There was of course a question as to whether the right to judicial remedy, which is provided as a fundamental right, would be hindered because of this provision. I think a way around could have been found out, but unless that is done, people will not be serious about mediation culture in this country, and settlement of disputes may not happen to the desired extent, even though the law is very robust. Lastly, sir, the government is the main litigant in several cases. And I think instead of
completely taking government, state, central, every agency of government out of this entire process, a solution would have been found in which some amount of cases through the mediation process, which has enforceability, could have been provided in the Act. This was also a recommendation of the Standing Committee. I think you would probably like to reconsider it. Once again, I support the bill. As I said, this is the first standalone mediation bill in this country, and it's a significant piece of legislation. I completely support the bill. Thank you so much. Sri Bhuvaneshwar Kalita, BJP. Time is 10 minutes. Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on this bill, and I congratulate you to see in the chair. My heartiest congratulations. This bill actually is related to our traditions, our traditional society, where we had the mediation tradition in this country from centuries. As we all know, it was strengthened by the panchayat system, and in the panchayat, the elders, the village elders and the society elders sit and mediate things so that it doesn't, and to keep harmony in the society. Later on, the Britishers brought this mediation system to the judicial system, to the court system, but over the years, because of the Singapore Convention on Mediation, where India is a signatory, we had to shift to the mediation system, and over the years, the mediation process has been revolutionized, and I congratulate the government led by our Adhanir Sri Narendra Modi ji and the minister concerned for bringing this bill, bringing this revolutionary bill to revolutionize the judicial system, the judicial process in this country. Madam, the object of the bill is to facilitate and promote mediation in India, particularly institutional mediation, for the resolution of disputes, encourage community mediation, and make online mediation an acceptable and cost-effective process. Madam, I will not prolong my speech. I will be within the limited time that has been given to me. But I must highlight the key. I must speak on the key highlights of this bill. One of the key highlights is domestic and international mediation of its application. The bill defines domestic mediation as mediation conducted in India involving parties who reside, are incorporated or have business in India, and where the mediation agreement states the application of Mediation Act 2021. It also recognizes international mediation involving commercial disputes with at least one party having a foreign connection. Madam, the mandatory pre-litigation mediation and settlement, about which the Standing Committee, this bill has gone to the Standing Committee, and many of the Standing Committee recommendations has been incorporated in this bill. One such recommendation was from the Standing Committee: pre-litigation mediation should be reconsidered, made optional, and introduced in a phased manner to avoid case delays. Madam, this bill makes pre-litigation mediation mandatory for disputes in accordance with the provisions of the bill before filing any suit or proceeding in any court or tribunal. Parties must attend at least 2 mediation sessions, and failure to do so without reasonable cause may incur costs. So there is enough scope for mediation. There is enough scope to solve their problems out of the court. So this pre-litigation mediation is one of the important part of this bill. And another important Standing Committee suggestion was the number of disputes in the first schedule should be reduced to ensure more cases
to go through pre-litigation mediation. Mediation should be allowed in cases involving disabled individuals and those affecting the rights. So, Madam, disputes not fit for mediation, which includes certain disputes like prosecution cases, disputes affecting third-party rights, and matters related to tax allocation, the central government can amend this list. The mediation process and time limit, about which the standing committee has said that a provision should be included in the bill for punishing breaches of confidentiality in mediation proceedings. The timeline for mediation should be reduced to 90 days to 60-day extension instead of 180 days. The definition of international mediation should be revised to align with the Singapore Convention for cross-border enforcement of settlement. As I said earlier, in the bill, mediation proceedings are confidential, and parties may withdraw after the first two sessions. The bill sets time limit of 180 days for mediation, extendable by an additional 180 days with the consent of the parties. Madam, another very important issue here in this bill is the ground to challenge the mediated settlement agreement. As we know that there are many grounds because the settlement between the parties may not be acceptable. So there are challenges in mediated settlement. The mediated settlement agreement, including fraud, corruption, impersonation, and disputes not fit for mediation. So these are the excluding clause, and the most important point is the recognition of institutional mediation. We have accepted it, and the Mediation Council of India will regulate these provisions. Another, we are going through a global transformation scenario where online mediation has become very important, and this bill recognizes the online mediation, allowing parties to engage in pre-litigation mediation using applications and computer networks with written consent. Madam, the establishment of Mediation Council of India, which was also suggested by the Standing Committee, the bill provides for Mediation Council of India, and the Mediation Council of India should be the sole authority to regulate all mediation service providers and institutes. Further, Mediation Council should also be constituted in all states that will function under the control of Mediation Council of India. These have been accepted, and this is one of the highlights of the bill. With this, I conclude, Madam. Thank you very much. Sri S. Niranjan Reddy. Thank you, Madam Chairperson. My party supports the bill. There are many reasons why the bill needs to be salutary. It has been spoken about. Given the short time, I would rather focus on a few things that I think the government may have to be aware of. First, Madam, I feel that the mandatory pre-litigation mediation that has been provided under Section 6 in the longer run will be very useful. But I have one concern which I wanted to bring it to the notice of the government. First, that if this pre-litigation mediation is mandatory, it means that the moment the bill is passed, no person in India, in any Mofussil area, in any district court will be able to file a civil suit from the next date, because the courts will say you will have to do a mediation. Very good suggestion, because in the long run it will help. My suggestion for the government, therefore, Madam, is that first they must ensure that the mediation infrastructure is created, because there is a Mediation Council of India. They will have to train people, people will have to be registered as mediators. The moment that happens, then I think this provision can be enforced. Thankfully, the government has thought through, the government has provided in Section 1 that it can bring into force various sections at different times. And the government has been doing that in IBC, in Companies Act.
where different provisions have been brought into force at different times. So my first concern therefore, sir, is, madam, is that if this act is passed, if this section is notified immediately, it may create a lot of problems for litigants who are going to the court for the purpose of seeking a relief. The second concern I have, madam, is that there is a provision now made that because there will be a pre-litigation mediation which is mandatory, if any party needs an urgent order, they will have to go to the court for the purpose of seeking an interim relief. That is section 8 of the proposed bill. This is again a very good feature because eventually when pre-litigation mediation becomes mandatory and enforceable as and when government notifies it, we will need a provision like this where some person having an urgent necessity of an interim order may have to go to court. But the problem, ma'am, I see is that if some person approaches the court and takes an interim order, there is a similar provision under the Arbitration Act, which is section 9. There is no appeal provided against this order, and quite a few times we see that people go to the court, the trial court may make a mistake in giving an order. At least one appeal needs to be provided. I think the government decided not to have an appeal provision because it might delay the process. While I understand the reason why they are not providing for an appeal, I would request the government to consider if they would want to make one of these first round of an order made in an interim, like under section 9 of the Arbitration Act, any interim order, there is an appeal that can be maintained to the court which regularly hears the appeal. Then the third concern which I have, because the committee recommended that the mediation period needs to be reduced from 180 days. The Act now provides for 180 days plus 180 days. While I understand the reason that they may want to be practical to ensure that it is that the mediation actually has the time space for ensuring it is going to work out. Once the pre-litigation mediation is going to be made mandatory, as and when the government decides to notify it, then if some person wants to delay the litigation, in litigation, madam, one party will always be interested in delaying it because they benefit. Then 180 days plus 180 days in pre-litigation mediation would mean for a period of 1 year, except for the interim order which is not appealable, a party may not be able to go to court. This I would request the government to consider once. Then the last of the suggestions I have is the mediation service provider can be approached for appointing a mediator where two parties are not able to agree. But when they approach the mediation service provider, the Act provides that this service provider must appoint a mediator within 7 days. There is no default clause because we have seen under the Arbitration Act when there is a section 11 when person can approach the court, we have seen for years together the arbitrators are not appointed. So my recommendation therefore would be that if a person is not appointed as a mediator within 7 days by the mediation service provider, maybe the government may need to think if they would want to enable a party to approach the court. My last quick suggestion, sir, is any mediation that is procured under a Singapore Convention outside India that has not been made enforceable in India. India is doing this mediation bill by virtue of being a signatory to the Singapore Convention. My recommendation would be quite like the Indian mediation settlements would be enforceable outside. Outside settlements will become enforceable in India if they were to make a provision for enforcement at the appropriate stage. I thank the chairperson, vice chairperson for granting me the opportunity. I support the bill. Sri Abdul Wahab. Absent. Srimati S. Fangnan Konyak. Honorable Vice Chairperson, ma'am, thank you for giving me this time. As one of the means of alternative dispute resolution, the concept of mediation has been discussed in the country for a very long time. The August House is aware that mediation is a method of resolving conflicts, disputes, where two or more parties arrive at a compromise solution with the help of a neutral party, specifically a mediator. A mediator is not a judge, but rather a facilitator. While there are certain laws like the Companies Act, there is no standalone legislation on mediation. The mediation bill seeks to meet that particular requirement. If the bill is passed, it can change the legal and judicial landscape of the country for the better. Mediation is a cheaper and faster means
of ensuring dispute settlement, it goes without saying that the judiciary in our country is burdened with a huge backlog of over 4 crore cases. We are well aware of the fact that it would take decades to clear all the backlogs. The mediation bill, which seeks to institutionalize mediation for civil and commercial disputes, as well as setting up of a Mediation Council of India, is a step in the right direction. The bill defines mediation as a process, whereby party or parties request a third person referred to as a mediator or mediation service provider to assist them in their attempt to reach an amicable solution to a dispute. This bill would provide a uniform procedure to be followed for mediation in the country. To my understanding, it would usher in a robust mechanism for solving disputes. Besides, mediation is not a new or recent thing in our country. It is something which has been in practice for centuries. In fact, it exists to this day, especially in rural India. Having a specific law on mediation would provide sanctity to this mediation process. Most importantly, a law on mediation is of the utmost necessity, given the fact that India is also a signatory to the Singapore Convention on Mediation. An effective dispute resolution process means reducing the burden on the courts, saving time, resources, and litigation costs among many, not to mention that it would have a significant impact on the economy, as well as promote the ease of living for citizens, access to justice, and rule of law. The mediation bill would be a game changer in many ways. The bill provides for the mediation process to be completed within a period of 180 days. Pre-litigation mediation has also been made voluntary instead of mandatory. Further, to fulfill the objectives of Digital India, the bill also provides for online mediation. Parties can also withdraw from mediation proceedings or request for change of mediator. Provision for international mediation has also been provided for in the cases where one party is other than that of Indian nationality. Under Clause 8 of the bill, a party may, in exceptional circumstances before the commencement of or during the continuation of mediation proceedings, file appropriate proceedings before a court or tribunal of competent jurisdiction for seeking urgent interim measures. The establishment of a Mediation Council of India will also go a long way in ensuring stability and smooth functioning of the mediation process. An important feature of the mediation bill is the community mediation, where any dispute likely to affect peace, harmony, and tranquility among families or residents of or any area or locality may be settled through community mediation with prior mutual consent of the parties to the dispute. Clause 28 of the bill provides that mediated settlement agreement resulting from mediation is final and binding and enforceable in accordance with the provisions of Code of Civil Procedure 1908, in the same manner as it were a judgment or decree passed by a court. There are many other provisions which highlight the rationality of this bill and why it is of utmost necessity to the nation. I have touched upon only a few crucial points which needs to be emphasized. As stated earlier, mediation will be a game changer. It will change the way that justice is delivered in the country. The fate of the common man will be restored. I say this with a sense of conviction, having witnessed conflict resolution through mediation. Take the case of my state, Nagaland. Most of the times, disputes are solved amicably and swiftly with the intervention and involvement of a mediator. In most cases, it is a village council between families. And we also have our customary court, where disputes are taken to the Dobashi court and solved there instead of going to the legal judiciary. Nagaland has seen its fair share of conflicts between the security forces and various Naga political groups, as well as between Naga political groups. Even in such cases, civil society organizations have played the role of mediators and have successfully brought an end to conflicts, as a result of which there is relative peace in the state. Although citizens in Nagaland can take the legal route, and which they do, majority of the Naga populace prefer to settle disputes by way of customary laws. Notwithstanding the fact that customary laws have always been a part of Naga society, most Nagas opt for it because it ensures swift justice, if that is the appropriate term. Even in cases of theft, robbery, boundary disputes, etc., one would find that mediation by a third party is the preferred method of settling disputes. The point I'm trying to make is that the proposed mediation bill will bring concrete and monumental changes. The common man, who usually has to wait for years, even decades, and will be able to breathe a huge sigh of relief once this becomes a law.
In this country, justice for many is a luxury. We cannot allow it anymore if we are to move forward as a society. A country burdened with late delivery of justice cannot be a just society. With these words, I wholeheartedly congratulate our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and our Honorable Union Minister, Shri Arjun Ram Meghwal ji, for this momentous bill, and I support this bill. Thank you. Sri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Madam. On behalf of my party, YSRCP, and my leader, YS Jagan Mohan Reddy Garu, I rise to support this bill, Madam. There are 4 points which I would like to bring to your notice. The first point is, I draw your attention and the attention of the Honorable Law Minister to clause 6, 3, subclause 3. Sir, the clause reads like this: for the purpose of subsection 1 and subsection 2, unless otherwise agreed upon by the parties, the mediator, there are 4 subclauses, 4 subclauses, that is, registered with the council, empanelled by the court annexed mediation center, empanelled by the authority constituted under the Legal Services Authorities Act 1987, and, not or, not OR, and empanelled by the mediation services provider registered under this Act. Madam, I can say that it is impossible for any person to become a mediator when all the 4 clauses are to be complied with. In reality, government should have made it at least RRR, ORR. One of the clauses, 4 clauses, could have been complied with. So therefore, I request the Honorable Law Minister to make suitable amendments to this bill in this regard. Madam, there are about, the second point is, there are about 4.5 crore cases are pending in various courts in civil cases. Presently, at present, before this bill is enacted, there are only 90,000 cases per annum are being disposed of by way of arbitration or mediation, and it is only not even, it is less than 1% of the pending cases in the civil court. So the way, see, after this enactment, unless the mediators, number of mediators are increased substantially by 100 times. As of 2022, there are 16,000 mediators working and 570 mediation centers are there. Unless this is increased by 100 times or even more than 100 times, the purpose for with which this enactment is being made will not be fulfilled. So therefore, I request the Honorable Minister to increase the number of mediators and also increase the number of mediation centers, Madam. Madam, see, the Mediation Council of India, the next point is, the Mediation Council of India is totally responsible for the mediation. Therefore, the Government of India, the Law Ministry should ensure that the trained personnel and also the persons with judicious application of mind should be there in the Mediation Council of India, so that the purpose of the bill would be achieved. The next point, Madam, community mediation. This is very, very important. I request the Honorable Law Minister to make note of it. There are certain delicate political issues which cannot be solved otherwise. They can be solved through community mediation. For example, widening of the roads and the religious matters, and then etc. Those cannot be settled otherwise. It can be settled through community mediation, Madam. The next point, Madam, the bill provides mediation to be completed within 180 days. Sir, this 180 days, of course, it's good that mediation should be completed in 180 days. But however, there are no timelines fixed on the courts to refer the matter to pre-litigation mediation. There is no time limit that has been fixed. There is no time limit that has been fixed to appoint the mediator upon the request of the parties. There is no time limit. There is no time limit for confirmation by the court of the mediated settlement agreement. So therefore,
there has to be time limit to be fixed even for all these three issues which I have referred to, Madam. And the last point, Madam, the establishes with the promoting the mediation given the size of the country. Our country is very large in size, and there is a need to decentralize the mediation process and by establishing the mediation councils in the states also. Therefore, when there are the 29 states or 30 states and 30 state councils are also established like medical council and bar councils. With this, we support the bill. Thank you very much, Madam. Dr. M. Thambidurai. Absent. Sri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मंत्री श्री मेघवाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है वह एक कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो काम आज़ादी के बाद तुरंत हो जाना चाहिए था, हमने दशकों उसको बर्बाद किया। भारत एक ऐसा देश है जो मल्टीलिंगुअल है, मल्टीकल्चरल है। जिस देश में 6,64,369 गांव हों, 4,535 कम्युनिटीज़ हों और 645 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हों, उस राज्य में जो न्याय का सिद्धांत है, मैं केंद्रीय न्याय मंत्री से कहूँगा कि जो न्याय का सिद्धांत है वह सिर्फ यदि कानून पर आधारित होगा तो वह देश उलझता रहेगा। और इसी उलझन के कारण जो यूरोप का हम पे प्रभाव था, जिस प्रभाव के कारण स्टेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी यानी समाज का राज्यीकरण कर दिया गया था, यह जो कानून है यह राज्य का समाजीकरण कर रहा है, यानी समाज के आधार पर राज्य के सामने की समस्याओं का समाधान करना। जिस राज्य में बहुसांस्कृतिकवाद हो, जिस राज्य में बहुत से समुदाय हों, अभी हम नागालैंड के साथी को सुन रहे थे, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा नॉर्थ ईस्ट से। वहाँ एक खासी समुदाय है। खासी समुदाय में दरबार नाम की एक संस्था है जिसका लीगल एंटिटी नहीं है, वो उसका सोशल एंटिटी है। दरबार में एक सरदार होता है, वे चुनते हैं और दरबार का जो फैसला होता है वो कम्युनिटी पर लागू होता है, समुदाय पर लागू होता है। यानी कि पंचायत व्यवस्था से लेकर दरबार तक जिस पंचायत व्यवस्था को हमने भारत में अपनाया, सदियों से हमने अपनाया, इसी कारण से चार्ल्स मेटकाफ ने ब्रिटिश राज में भारत के गांवों को लिटिल रिपब्लिक कहा था, एक छोटा गणतंत्र कहा था। भारत गणतांत्रिक गांवों का एक समूह उसने बताया था। और मैं बताना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पर जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी, 5th सेलेक्ट कमेटी बनी थी, 1912 में जो उसने रिपोर्ट दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने भारत की न्याय व्यवस्था को गांव आधारित, समुदाय आधारित बनाने की बात तब की थी 1912 में, जो कि आजादी के बाद के नेहरू युग के शासकों को समझ में तब तक नहीं आए, जिसमें उसने कहा था कि भारत के गांव एक छोटे संप्रभु राज्य की तरह हैं। भारत का गांव जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक एक स्वायत्तता, संप्रभुता है, उस लिटिल होल, जिसने कहा था एक छोटा लिटिल सोवरेन होल जो है, उस गांव को, उस समुदाय को, उस ट्राइबल कम्युनिटी को न्याय के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि मलेशिया एक ऐसा देश में जिसकी एक संस्था है रकून टेटंगा, जिसका मतलब है पीसफुल नेबर क्रिएट करना। इजराइल में सुलह सिस्टम है जिसमें कल्चरल टूल के आधार पर जो डिस्प्यूट्स है सो सुलझाना। मैं इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम मानता हूं कि कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात कही गई थी, उसमें समुदाय को एक आधार बनाया गया है। इस समुदाय को आधार नहीं बनाने के कारण आज हम देखते हैं कि न्यायालयों में एक बड़ी संख्या में ऐसे केसेज हैं जिसका निपटारा न्यायालय करने में जटिलता का अनुभव करता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात, जब हम न्याय के सिद्धांत पर जाते हैं कि हर भारत के समुदाय की अपनी परंपरा है, अपनी आस्था है, अपने तौर तरीके हैं, तो मैं न्याय मंत्री जी से कहना चाहूंगा
कि भारत में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म समुदाय स्तर पर रहे हैं उसमें बहुत ही विविधता रही है। तो ट्राइबल कम्युनिटी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो खासी में है, जो मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जो मेन लैंड में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, उन सभी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को पर एक समाधान पर एक अच्छा शोध होकर हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करें। कि कई देशों में, यूरोप के कई देशों में कम्युनिटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई है। तो एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विविधता और बहुलता का स्थान होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आता है कि जस्टिस विदाउट लॉ, साधारणतः जस्टिस का सिद्धांत कानून पर आधारित है, लेकिन हम जब सोसाइटिफिकेशन ऑफ स्टेट हमने जब किया, जब राज्य का समाजीकरण करने लगे, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि हम कानून के बाहर जाकर डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करें। राम जन्मभूमि के आंदोलन में इसका एक बहुत बड़ा कम्युनिटी डिस्प्यूट को समझाने का एक प्रयास हुआ था, जिसमें बहुत अधिक तक भारतीय राज्य को सफलता मिली। तो अंततः मैं कहना चाहता हूं, जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड की बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और इस डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, भारत के संविधान के तहत भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवस्था, जो हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा, जो हमने दंड नीति में, महाभारत के दंड नीति में देखा, उन सब के आधार पर भारत में जो एक अच्छी विरासत और परंपरा है, उस विरासत परंपरा के आधार पर जो कानून बनाने की कोशिश हो रही है, यह कानून निश्चित रूप से भारतीय राज्य के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय उपसभापति महोदया, आज ये एक ऐतिहासिक बिल मोदी जी की सरकार के द्वारा लाया गया है। चूंकि लोकतंत्र की संपूर्ण व्यवस्था न्याय की निष्पक्षता और न्याय की सुगमता पर टिकी रहती है, आज जब किसी भी व्यक्ति को अंततः कोई परिणाम चाहता होता है, तो बड़ा फेमस सेंटेंस है जो कहा जाता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी वांट्स टू गो टू कोर्ट। तो बीच का रास्ता क्या है? इफ यू डोंट वांट टू गो टू लिटिगेशन, द आंसर इज मीडिएशन। और आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर होती है तो उस गरीब व्यक्ति को होती है, जिसके लिए समस्या यह होती है कि गांवों में कहा जाता है कि कई बार मुकदमा लड़ते लड़ते जमीन जायदाद भी बिक जाती है। न्यायिक व्यवस्था के द्वारा निर्णय आते हैं, निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, परंतु इसमें एक समस्या यह होती है, किसी के हिस्से में दूध आता है, किसी के हिस्से में पानी आता है, फिर उसके मन का पानी जोर मारता है और वो बड़े कोर्ट में जाता है, फिर और बड़े कोर्ट में जाता है, तो समस्याएं टेक्निकल भी चलती रहती हैं, समाधान भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और सबसे ज्यादा इसकी समस्या गरीब व्यक्ति को मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार ने जैसे हर गरीब के हाथ तक विकास की रोशनी पहुंचाई है, हर गरीब के हाथ तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाई है, तो यह बिल एक ऐसी भूमिका बना रहा है जहां न्याय व्यवस्था की सुगमता भी हर गरीब को सहजता के साथ उपलब्ध हो सकती है। जिसे हम कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, तो करोड़ों लोगों तक यह समाधान पहुंचेगा। दूसरी इसकी व्यवस्था अगर हम एक बड़े स्तर पर देखें, आज भारत विश्व की एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। जिस समय बड़े बड़े फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर वो डिस्प्यूट कोर्ट में ही जाएंगे तो उनके समाधान में कई बार टाइम, प्रोसीजर, सारी चीजें बहुत लग जाती हैं। इसलिए यदि यह इस बिल में जो व्यवस्था की गई है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन की जो व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि एक मौका देता है कंपनियों को कि वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकें कि अगर वो लंबे लिटिगेशन में जाएंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसका एक प्रमाण यह है कि 2015 का जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट था, जिसमें 2018 में मीडिएशन को एक प्रकार से इनिशिएट किया गया या काफी आवश्यक किया गया, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने लंबी छलांग मारी। तो मैं कह सकता हूं कि इसके द्वारा जो बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं उनको भी संभालने में एक बड़ी हमें बहुत सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त एक और विषय जिसका डॉक्टर अमर पटनायक जी ने भी उल्लेख किया था, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कई ऐसी कंपनियां हो सकती हैं कि जिनके ऊपर कोई दूसरे देश के कानून के साथ भी उनका संबंध हो, और उसमें जब आप लिटिगेशन में जाते हैं या कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं तो उसमें अगर दूसरे देश के कानूनों का थोड़ा भी प्रभाव आ गया तो वो बहुत पेचीदा हो सकती है व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि इस ढंग की व्यवस्थाओं के लिए तो ये मीडिएशन का लॉ एक वरदान की तरह आएगा कि ऐसी स्थिति में दोनों ही जो प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी ग्रुप हैं वो अपने लाभ हानि को देखकर यह तय कर सकते हैं कि इसमें बीच में से समाधान कैसे निकलेगा, जिसके लिए इस बिल में व्यवस्था है कि मीडिएशन काउंसिल के लोग उसको तय करेंगे अगर फॉरेन कंपनी के साथ किसी प्रकार का मीडिएशन होगा, और उसके साथ साथ यह भी तय होगा कि उस मीडिएशन की प्रक्रिया के लिए प्रोफेशनल मीडिएटर्स भी आगे बनेंगे, जो आगे जाते जाते धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आएगी कि आने वाले समय में हमारे पास एक सुविचारित सुव्यवस्थित एक मैकेनिज्म बन जाएगा जिसमें कि हर प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मीडिएटर्स होंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन्होंने इस प्रोसेस का, सरकार ने सिंप्लीफिकेशन भी किया है, स्टैंडर्डाइजेशन भी किया है और मॉडर्नाइजेशन भी किया है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन प्रोसेस को भी मान्यता दे रहे हैं, और कोविड के बाद के दौर में आपने देखा कि ऑनलाइन जिस तेजी से आगे बढ़ा है, तो उससे एक जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसमें एक और भी अच्छाई है कि सारा डिजिटल रिकॉर्ड आज की डेट में अवेलेबल होता है, तो बहुत सहजता के साथ आप ऑनलाइन मीडिएशन को भी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मेरा यह विचार है, एक तीसरा पक्ष जो इसमें कम्युनिटी और फैमिली, यानी तीसरा और चौथा पक्ष के ऊपर, कम्युनिटी के संदर्भ में तो मैं साफ कह सकता हूं कि यदि न्यायिक निर्णय आता है तो किसी एक के लिए स्वागत योग्य होता है और दूसरे के लिए, एक को हर्ष और दूसरे को विषाद देता है। सामंजस्य उसके द्वारा नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है मध्यस्थता का भाव दोनों के मध्य कटुता को समाप्त करके एक मधुरता भी ला सकता है यदि मीडिएशन के द्वारा किन्हीं दो समुदायों के बीच में, क्योंकि आजकल सामुदायिक विषय भी बहुत सारे आने लगे हैं, लोग उसके लिए भी कोर्ट जाने लगे हैं, तो मुझे लगता है इसमें यह समाधान ज्यादा बेहतर ढंग से निकले। तीसरा, फैमिली कोर्ट्स के संदर्भ में एक और बात भी कहना चाहता हूं कि आज भारत की अदालतों में लगभग 4.5 करोड़ केस लंबित हैं, जिसके संदर्भ में आंध्र उच्च न्यायालय के एक जज साहब ने एक टिप्पणी की थी कि यदि सारे मैटर्स का सलूशन वर्तमान स्थिति से हो तो 300 साल लगेंगे इन सारे मैटर्स को रिजॉल्व होने में। तो अगर हमें उस चक्र से बाहर निकलना है तो मीडिएशन ही रास्ता है। और जब फैमिली की बात आती है तो मुझे लगता है कि फैमिली के संदर्भ में यदि मीडिएशन की व्यवस्था अच्छे ढंग से लागू हो, कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली कोर्ट में भी आज 12 लाख मामले फैमिली कोर्ट में लंबित हैं। कई बार होता है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है कि हमारे कई लोगों को अदरवाइज भी लगे, आज की डेट में हम लोग कई बार वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म, मगर आज एक और चीज आने लगी, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वाभिमान अपनी जगह है, परंतु आज ऐसी परिस्थिति बनने लगी है कि फैमिलीज में भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी के बीच में इतने प्रकार के विवाद होने लगे हैं कि अगर वो आगे बढ़े तो इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। आज अमेरिका में 50 साल पहले पर पर्सन पर फैमिली 3.2 था, आज 2.5% पर फैमिली। ये 0.7 कम होने पे उनको 41 लाख नए मकान बनाने पड़े, जिसका इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी पे $8 ट्रिलियन का पड़ा। भारत में 50 साल पहले ये 5.3 था, आज 4.9 है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। परंतु यदि ये 1 पॉइंट से कम हो जाए, यानी 4.9 से 3.9 आ जाए, हमें 6 करोड़ नए मकान चाहिए हों। और अगर हम अमेरिका के लेवल पे चले जाएं 2.5 पे, तो हमें 16 करोड़ मकान चाहिए होंगे। यू कैन इमेजिन द इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरगेट अबाउट द इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी और साइकोलॉजी पे, सोसाइटी पे क्या होगा वो तो एक अलग विषय है। इसलिए इस प्रकार के जो प्रोसेस हैं भविष्य में बहुत सी चुनौतियों से हमें बचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, राष्ट्रार्थे ग्रामं त्यजेत, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। तो यानी इसका अर्थ सिर्फ यह है कि अपने, यदि परिवार का विषय आए तो कम से कम अपने अहम भाव को पीछे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्षी भी आज यहां पे नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि वो मीडिएशन के साथ होंगे,
क्योंकि जो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्रंटेशन करके लड़े पड़े थे, अब एक दूसरे से मीडिएशन करने के लिए गिरे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो जरूर इस मीडिएशन के साथ होंगे, परंतु मैं इस मीडिएशन बिल का समर्थन करते हुए एक मामले में मीडिएशन का विरोध भी करता हूं। वो विरोध ये है कि जब कोई ये कहता है विदेश की धरती पर जाकर कि भारत के लोकतंत्र में मीडिएशन होना चाहिए, वहां से मध्यस्थता होनी चाहिए, तो उस मध्यस्थता के हम पूरी तरीके से विरुद्ध भी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसके द्वारा मोदी जी ने जो मैंने पहली पंक्ति कही थी उसी की दूसरी पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा, हम कहते थे। और प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, तो मैं कह सकता हूं आज जन जन के सागर तक वह नीर पहुंचाने का काम न्यायिक व्यवस्था में इसके द्वारा हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। ऑनरेबल श्री जी के वासन, ऑनरेबल जी के वासन, यू आर द लास्ट स्पीकर। Sir, we are a country of 140 crore population, sir. Naturally, sir, disputes, fights, frauds take place because we are a democracy which is praised by the whole world. So, sir, this mediation seems to be a must for us. We are also a signatory of Singapore Convention. Today we have around 4.5 crores pending cases. This bill is well consulted and incorporated, sir. This bill gives confidence and ease for doing business for all classes. This bill practices institution mediation, community mediation and online mediation, sir. Guidelines have been given for all the three, especially up to today's technology for the online mediation, sir. Sir, I would kindly like to say approval from the central government should be for making things easier or not making things to delay. Mediation committee should have reputed learned persons so that they are able to settle urgent matters within a stipulated time. Likewise, sir, time frame 180 days to 180 days should be considered in a very appropriate way, not for delay. Sir, to cut short and complete my speech, I appreciate this bill, sir, which is the first standalone bill, and I also would like to say violation of guidelines are clear, and this bill will really help crores of people who are waiting in the queue in the pending cases list. With this, I support this bill. Thank you, sir. थैंक यू। अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से उन्हीं सभी 8 वक्ताओं का एक मिनट माननीय मंत्री जी, आपका नाम यहाँ आया था, सूची में तो नाम नहीं है, एंड यू नो द रूल्स। राम, आप 2 मिनट बोल लें प्लीज, 2 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे मेडिसिन बिल पे बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत संक्षेप में, बस संक्षेप में मान्यवर कि अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इस बिल का मैं स्वागत भी करता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए एक मीडिएशन की व्यवस्था करी है, और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ ध्यान अन्य बातों की तरफ भी लाना चाहता हूं जो अभी भी घटित हुई हैं। माननीय उपसभापति महोदय, 7 जुलाई को मद्रास कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि बाबा साहब की कोई फोटो या स्टेचू तमिलनाडु के अंदर किसी भी कोर्ट में नहीं लगाई जाएगी, जबकि एक नई परंपरा लगाई गई। ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई थी, और साउथ के अंदर बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुत हैं, इवन पूरे देश के अंदर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब सिर्फ कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं थे, वो इस देश के अंदर संविधान के निर्माता भी। तो इसके लिए भी माननीय मंत्री जी से बात कहूँगा कि इस पर भी संज्ञान लाएं और कुछ न कुछ मीडिएशन की बात इसमें भी करें। और साथ ही पूरे देश के अंदर माननीय उपसभापति महोदय SC/ST एक्ट का वायलेशन होता है। सेक्शन
14 SC/ST एक्ट 2018 ये कहता है कि पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाए जाएंगे। जो SC/ST के जो कानून होते हैं, जो मतलब जो केसेस होते हैं, उनको 2 महीने के अंदर डिस्पोज करना होगा। मानवर इस पर भी कोई खास काम नहीं हो पाया अभी तक, इस पर कोई खास काम नहीं हो पाया। उसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पूरे देश के अंदर SC/ST लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, ये पूरे देश भी जानता है और पूरा सदन भी जानता है। और माननीय साथ ही मैं 2 घटनाएं बिहार की भी जिक्र करना चाहूंगा, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। माननीय जी कृष्णैया विषय ये गरीबों का विषय है, इसको भी सुनना चाहिए। माननीय कानून मंत्री जी बैठे हैं, कानून की बात विषय पर बोलिए। तो आपने नाम नहीं दिया था, आपको इजाजत दिया मैंने दिया हुआ था, आप देख सकते हैं वीडियो में। प्लीज विषय पर बोलिए। विषय पर मैं बोल रहा हूं माननीय। इसमें भी एक और लास्ट में बात करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जी कृष्णैया के हत्यारे को जेल हुई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उसको भी वहां के जेल के कानूनों में बदलाव करके छोड़ा गया। माननीय बात तो सुननी चाहिए कि किस तरह से कानून का उल्लंघन होता है। मेडिएशन बिल पर ये चर्चा हो रही है, आप जानते हैं रूल 110 के तहत सरकार को मेडिएशन आप जानते हैं रूल 110 के तहत आप दूसरे विषय पे करेंगे, अब चर्चा में नहीं जाएगी बात। प्लीज राम जी। माननीय, अगर हम किसी की बातों को रखेंगे, देश के माननीय कानून मंत्री जी बैठे हुए हैं, मेडिएशन पे मैंने बोला है कि हम तो स्वागत योग्य है। जब बड़े बड़े घरानों के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं तो इनके लिए भी काम करने की जरूरत है। माननीय धन्यवाद। है कि नहीं माननीय? इसलिए माननीय मैं एक लास्ट पॉइंट करना चाहता हूं, उसमें भी मीडिएशन की जरूरत है। अभी सभी लोगों ने अलग अलग ट्राइबल्स को लेकर बात करी है, वो भी इस विषय में नहीं आता है, तो मैं उसी को लेकर के बात करना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट जो खत्म किया गया, माननीय लास्ट पॉइंट है मेरा पास। थैंक यू। 2 मिनट का समय हो गया। 30 कंक्लूड करो। 30 सेकंड कंक्लूड करें। 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ SC/ST एक्ट को लेकर के, उसके बाद तमाम हजारों बच्चों के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, तमाम सरकार में लगा दिए। कई बच्चे उसमें शहीद भी हो गए, उनकी डेथ हो गई। माननीय उसमें जो मुकदमे लगाए गए, मिनट हो गया, मुकदमों को आज तक खत्म नहीं किया गया है। माननीय आपसे मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी उसमें कोई ना कोई मेडिएशन करें और सरकारों को आदेश जारी करें कि उनकी भी लाइफ बचाई जा सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी आपका जवाब। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से सभी जो 9 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे अधिकतर माननीय सदस्यों ने कहा कि भारतीय परंपरा में जो ग्राम पंचायतें थी वो मध्यस्थता का रोल अदा करती थी, इस बात में सच्चाई भी है। और ग्राम पंचायतों में जो मध्यस्थता का भाव था वो लंबे समय तक भारत में रहा, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया वो भाव कम होता गया और हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़्यादा पड़ते गए। और जब मुकदमे होते हैं तो पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और दुश्मनी भी दुगनी हो जाती है। ये भाव भी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रकट किए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भारत को विकसित भारत बनाना है, और प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राण का भी जिक्र किया था 15 अगस्त को पिछले साल। उसमें भी एक प्राण है या प्रण है भारत को विकसित भारत बनाना, मानव केंद्रित। तो मानव के संवेदनाएं कैसे बढ़े, वो क्यों झगड़ता है, उसमें कैसे कमी करें, ये इसमें भाव छिपा हुआ है। गुलामी की मानसिकता के अंशों का अंत करना, ये भी एक भाव है। विरासत पर गर्व, अब माननीय सदस्य ने कहा कि विरासत पर गर्व करना चाहिए, ये भी एक भाव है। एकता और एकजुटता और कर्तव्य भाव को बढ़ाना, ये पंच प्रण है। इसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिश काल में जो मुकदमेबाजी का दौर ज़्यादा शुरू हुआ, उसके बाद समय समय पर जब देश आज़ाद हुआ तो ये विषय आया कि मीडिएशन कहाँ गायब हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं जिनका जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने M.R. कृष्णामूर्ति बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कहा, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम बनाने की सख्त जरूरत है। देयर इज ए नीड टू बी ए एक्ट ऑफ मीडिएशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा M.R. कृष्णामूर्ति बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस में। उसके बाद एक और केस महत्वपूर्ण हुआ,
जो के श्रीनिवासन राव बनाम डीए दीपा, इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैट्रिमोनियल विवाद हैं उनमें 10-15% मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से निपटारा होता है। कोर्ट ने कहा कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन का विचार जोर पकड़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में कई वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाता है। मुकदमे पूर्व मध्यस्थता में इन केंद्रों की सफलता दर अच्छी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया और सुझाव दिया कि यदि सभी मध्यस्थता केंद्र प्री लिटिगेशन डेस्क क्लिनिक स्थापित करें और पर्याप्त प्रचार प्रसार करके वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाए तो मुकदमे पूर्व निपटारे से कई परिवार कठिनाइयों से बच सकते हैं, जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे कि हमारी फैमिली में भी विवाद हो रहे हैं। इसका जिक्र भी के श्रीनिवास राव बनाम डीए दीपा के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी थी माननीय, इसका नाम था मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, MCPC जिसको हम कहते हैं। इसने भी अगस्त 2020 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि मीडिएशन के क्षेत्र में काम होना चाहिए। मैं ये इसकी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं कि ये क्यों बहुत पहले से भी काम चल रहा था, लेकिन इस दिशा में तेजी तब पकड़ी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने उस पर गंभीरता से सोचा, क्योंकि हमारी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो टुकड़ों में नहीं सोचती है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है और पूरे समग्र विषय को एक साथ लेकर के और इस एक्ट को लाने का प्रयास जो किया वो बहुत सराहनीय प्रयास मैं मानता हूं। फिर अगस्त 2021 को ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, इसी उच्च सदन में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर राज्यसभा जब इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत से सदस्यों ने डिमांड की कि इसको कमेटी में जाना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। इस कमेटी को ये गया जिसके अध्यक्ष सुशील मोदी जी हैं, माननीय भूपेंद्र जी भी उस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, करीब 52 सजेशन इस कमेटी ने दिए। हमने इन सुझावों को करीब 25 सुझावों को हमने माना है। अब 27 ऐसे सुझाव हैं जो बाद में इस पर चर्चा करते समय हो सकता है इसको रूल बनाते समय इस पर विचार करें, लेकिन कमेटी के अधिकांश अच्छे सुझावों को हमने बिल में माना है। मैं एक और निवेदन आपको करना चाहता हूं कि हम ऐसा नहीं है कि मीडिएशन हम कर नहीं रहे थे। सीपीसी का जो सेक्शन 89 है उसके तहत ये काम होते थे, मीडिएशन सेंटर कोर्ट में बने हुए थे, लेकिन इसमें तेजी नहीं थी और एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं होने से इसका कोई लीगल आधार नहीं था। इसलिए लोग कहते थे मीडिएशन करें क्या फायदा, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। इसलिए इसकी मीडिएशन एक्ट की जरूरत थी जो मैं लेकर के आपके मध्य आया हूं। बहुत से ऐसे विवाद जिसका राकेश सिन्हा जी जिक्र कर रहे थे कि हमने मीडिएशन के माध्यम से सुलझाए, जैसे असम नागालैंड सीमा विवाद है, अयोध्या बाबरी मस्जिद का विवाद का जिक्र उन्होंने किया, इसमें भी मीडिएशन का अपना एक रोल रहा है। मैं एक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कह सकता हूं कि अप्रैल 21 से मार्च 22 की अवधि के दौरान भारत में मध्यस्थता के माध्यम से कुल 52,968 मामले निपटाए गए। अब ये संख्या कम है भारत के जैसे बड़े देश को देखते हुए, इसलिए हम इसमें तेजी लाना चाहते हैं। इसलिए ये एक ऐसा मैकेनिज्म भी है कि हम जो लंबित मामले हैं उनको कम कर सकते हैं। ये विषय कई सदस्यों ने रखा कि भारत में डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में करीब 4,43,00,000 मामले पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 60,63,000 मामले पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी 69,766 करीब 70,000 के मामले पेंडिंग है। तो ये 5 करोड़ से ऊपर संख्या हो जाती है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसको हम कैसे कम करें पेंडिंग मामलों को? तो इसके लिए हमने कई जो प्रयोग किए उसमें एक ADR भी एक प्रयोग है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसी में ये मीडिएशन आता है। अदरवाइज तो राष्ट्रीय लोक अदालतें भी आपने देखी है, उसमें भी हम मामले निपटाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हमने ई कोर्ट के माध्यम से भी जल्दी मामले निपटाने शुरू किए हैं। अभी जो ट्रैफिक के
मामले हैं वो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से, अदरवाइज पहले कोर्ट में ये पुलिस केस दर्ज करती थी, कोर्ट में जाता था, समय लगता था। हम सेम डे निपटा रहे हैं, तेजी तो ला रहे हैं, फिर भी ये मीडिएशन के माध्यम से मुझे लगता है कि इसमें बहुत सुधार आएगा। अब जो मीडिएशन जो बिल हम लेकर के आए हैं, इसमें जो खास बातें हैं उनका थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहता हूं। यह एक लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया है, जो फ्लेक्सिबल, और ये वॉलंटरी भी हमने रखा है। ये हमारे जो सबसे पहले वक्ता हमारे अमर पटनायक जी बोल रहे थे कि ये मैंडेटरी, पहले जो बिल हम लेके आए थे इसमें मैंडेटरी किया था, लेकिन कमेटी भी कई बार बहुत अच्छे सुझाव देती है। कमेटी ने ऐसा नहीं है कि यहाँ जो स्टेक होल्डर है उनसे ही पूछा, विजिट भी किया और अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उनके ग्रुप से मिले, तो कमेटी ने सुझाव दिया कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको वॉलंटरी लेकर के हम आ रहे हैं। कानूनी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थता हटने की स्वतंत्रता, ये भी इसमें है, इस एक्ट में हम लेकर के आ रहे हैं। बातचीत से सीधा जुड़ाव, ये भी एक प्रक्रिया है। मध्यस्थ एक तटस्थी पक्ष, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, इसमें हम मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग का भाव भी ला रहे हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, कम लागत वाला भी एक माध्यम है, और ये इस विधेयक के माध्यम को हम समयबद्ध प्रक्रिया बनाता है, जिससे पार्टियों के लिए समय और धन की बचत होगी। जैसे पहले मैंने कहा कि जब मुकदमा होता है तो पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, और दुश्मनी भी दुगनी हो जाती है। इन सब चीजों को हम ठीक करने के लिए बिल लेकर के आ रहे हैं। विवाद समाधान कार्रवाई के दौरान और उसके बाद पार्टियों द्वारा अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए संभावना भी बढ़ जाती है, ये भी इसका एक भाव है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, ये हम बनाए रखी जाती है, इसमें बनाए रखेंगे। ये ऑनलाइन मध्यस्थता वाला विषय भी बहुत से सदस्यों ने कहा को विवाद समाधान के लिए स्वीकार्य तरीके से रूप में मान्यता देता है, जिससे पार्टियों की दूरी की बाधा भी दूर हो जाएगी। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये भारत ने 7 अगस्त 2019 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, इसे मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन कहते हैं। बहुत से सदस्यों ने सिंगापुर कन्वेंशन की बात की। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में अभी केवल 11 देशों ने ही सिंगापुर कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, और अभी सिंगापुर कन्वेंशन को सभी सिंगापुर कन्वेंशन ये जो सिग्नेटरी हैं कंट्रीज द्वारा आत्मसात नहीं किया गया। हमने लीड ली है, और जो जिन्होंने किया है वो छोटे इकोनॉमी वाले देश हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें लीड लिया है। मैं इसमें ये आपको कहना चाहता हूं। मैं एक पुरातन ज्ञान की परंपरा का जिक्र भी कई बार यहाँ आया, और अभी मैं जब यहाँ चर्चा के लिए खड़ा हूं तो मैं सदन में चर्चा होते हुए सुन रहा था, पीछे से माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण पहले मीडिएटर थे। ये चर्चा यहाँ हो रही थी, हैं? मैंने बराबर सुनी या नहीं सुनी? मेरे कान ठीक है इसका मतलब है? हाँ, पहले घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं पहला अंगद था, लेकिन भगवान कृष्ण, इसका मतलब मीडिएटर की परंपरा हमारे यहाँ रही है। कोई माना नहीं माना वो अलग बात है, लेकिन मीडिएटर तो रहा है। लेकिन इसको हम कानूनी पक्ष से मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना रहे हैं, रेगुलेशन दे रहे हैं। इसलिए जो भी दोनों पक्ष मिलकर के जब इस मध्यस्थता के भाव को और से एक समझौते पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि लंबित मामलों में भी कमी आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, यही समय है और सही समय है, भारत का अनमोल समय है, आजादी का अमृत महोत्सव है। अमृत काल में जो बिल पास होगा वो भारत के लिए भी अमृत सिद्ध होगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। The question is that the mediation bill 2021 be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 4 amendments. Numbers
97 by Dr. John Britas. Dr. John Britas absent. Number 3 to 5 by Sri Arjuna Meghwalji. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Honorable Sri Arjun Ram Meghwalji to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 2 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 as amended is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 6 to 12 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 3 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 as amended is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment. Number 13 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 4 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 as amended is adopted. Clause 5 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 14 to 20 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 6 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 as amended is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There is one amendment. Number 21 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 7 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 as amended is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment. Number 22 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 8 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 as amended is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 23 and 24 by Sri Arjuna Meghwalji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 9 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 as amended is adopted. Clauses 10 to 12 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 10 to 12 are adopted. Clause 13 stands part of the bill. There is one amendment. Number 25 by Sri Arjun Ram Meghwalji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 13 as amended to vote.
Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 as amended is adopted. Clauses 14 and 15 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 14 and 15 are adopted. Clause 16 stand part of the bill. There are 5 amendments. Number 26 to 30 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 16 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 as amended is adopted. Clause 17 stand part of the bill. There is one amendment, number 31 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 17 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 as amended is adopted. Clause 18 stand part of the bill. There are 3 amendments. Number 32 to 34 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 18 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 18 as amended is adopted. Clause 19 stands part of the bill. There are 3 amendments, number 35 to 37 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 19 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 19 as amended is adopted. Clause 20 stands part of the bill. There is one amendment, number 38 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 20 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 as amended is adopted. Clause 21 stands part of the bill. There are 2 amendments, number 39 to 40 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 21 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 21 as amended is adopted. Clause 22 stands part of the bill. There are 2 amendments, number 41 and 42 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 22 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 22 as amended is adopted. Insertion of new clauses 22A and 22B. There is one amendment for insertion of new clauses 22A and 22B. Number 43 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the new clauses 22A and 22B to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. New clauses 22A and 22B are adopted. Clause 23 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 44 to 46 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 23 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 23 as amended is adopted. Clause 24 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 24 is adopted. Clause 25 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 47 to 48 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 25 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 25 as amended is adopted. Clause 26 stands part of the bill. There is 1 amendment, number 49 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 26 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 26 as amended is adopted. Clauses 27 and 28 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 27 and 28 are adopted. Clause 29 stands part of the bill. There are 2 amendments. Number 98 by Dr. John Britas. Dr. John Britas absent. Number 50 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendment moved. I shall now put the amendment moved by Sri Arjun Ram Meghwal ji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 29 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 29 as amended is adopted. Clause 30 stands part of the bill. There is 1 amendment, number 51 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 30 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 30 as amended is adopted. Clause 31 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 52 to 54 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 31 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 31 as amended is adopted. Clauses 32 and 33 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 32 and 33 are adopted. Clause 34 stands part of the bill. There are 13 amendments. There are 13 amendments. Number 99 to 101 by Dr. John Britas, member absent. Dr. John Britas absent. Number 105 and 106 by Dr. V. Siudasan, member absent. Number 55 to 59 and 102 to 104 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Sri Arjun Ram Meghwal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the amendments are adopted. I shall now put the clause 34 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 34 as amended is adopted. Clause 35 stands part of the bill. There is one amendment, number 60 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 35 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 35 as amended is adopted. Clause 36 stands part of the bill. There are two amendments, number 61 and 62 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 36 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 36 as amended is adopted. Clause 37 stands part of the bill. There are four amendments, number 63 to 66 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 37 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 37 as amended is adopted. Clause 38 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 38 is adopted. Clause 39 stands part of the bill. There is one amendment, number 67 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 39 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 39 as amended is adopted. Clause 40 stands part of the bill. There is one amendment, number 68 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 40 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 40 as amended is adopted. Insertion of new clause 40A. There is one amendment for insertion of new clause 40A, number 69 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put new clause 40A to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. New clause 40A is adopted. Clause 41 stands part of the bill. There is one amendment, number 70 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 41 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 41 as amended is adopted. Clauses 42 and 43 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 42 and 43 are adopted. Clause 44 stands part of the bill. There are 6 amendments. Number 107 by Dr. V. Sivadasan, absent.
Member absent. Number 71 to 75 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Sri Arjun Ram Meghwal to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put clause 44 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 44 as amended is adopted. Clause 45 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 76 to 82 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 45 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 45 as amended is adopted. Please, Shanti rakhe, please. Clause 46 stands part of the bill. There is one amendment, number 83 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 46 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 46 as amended is adopted. Clause 47 to 48 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 47 and 48 are adopted. Clause 49 stands part of the bill. There is one amendment, number 84 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 49 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 49 as amended is adopted. Clause 50 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 50 is adopted. Clause 51 stands part of the bill. There is one amendment, number 85 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 51 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 51 as amended is adopted. Clause 52 stands part of the bill. There is one amendment, number 86 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put clause 52 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 52 as amended is adopted. Clause 53 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 87 to 91 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendments. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendments are adopted. I shall now put the clause 53 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 53 as amended is adopted. Clause 54 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 54 is adopted. Clause 55 stands part of the bill. There is one amendment, number 92 by Sri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, I move the amendments. Amendment moved. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 55 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 55 as amended is adopted. Clauses 55 and 57 stand part of the bill. Those in favor will... Clauses 56 and 57 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 56 and 57 are adopted. Insertion of new clause 57A. There is one amendment for insertion of a new clause 57A, number 93 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put new clause 57A to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The new clause 57A is adopted. Clauses 58 to 65 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 58 to 65 are adopted. माननीय सदस्यगण 6 बज चुके हैं. आज और 2 बिजनेस है और यह बिल पास हो रहा है. पूरा बिजनेस खत्म होने तक सदन बैठ रहा है. यह आम सहमति है. मानकर चलें. Deputy Chairman, sir, I would like to propose that this bill we are in the process of adopting it or discussing the final stages. We will conclude this, and after that we will take up one more bill. Thank you. The first schedule stands part of the bill. There is one amendment, number 94 by Sri Arjun Ram Meghwal. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the first schedule as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The first schedule as amended is adopted. The second schedule and third schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The second schedule and third schedule are adopted. The fourth schedule stands part of the bill. There is one amendment, number 95 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendments moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put fourth schedule as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The fourth schedule as amended is adopted. The fifth schedule to eighth schedule, the fifth schedule to eighth schedule stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The fifth schedule to eighth schedule are adopted. The ninth schedule stands part of the bill. There is one amendment, number 96 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the ninth schedule as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The ninth schedule as amended is adopted. The 10th schedule stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The 10th schedule is adopted. Clause 1 stands part of the bill. There is one amendment, number 2 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 1 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1 as amended is adopted. The enacting formula stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the enacting formula as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula as amended is adopted. The title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The title is adopted. Sri Arjun Ram Meghwal to move that the bill as amended be passed. Sir, I move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill, motion moved, please, motion moved that the bill as amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय सदस्यगण, the new bill, the Biological Diversity Amendment Bill 2023. माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी to move a motion for consideration of the Biological Diversity Amendment Bill 2023. Sir, I move that the bill further to amend the Biological Diversity Act 2002 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. कुछ बोलना चाहेंगे माननीय मंत्री? थैंक यू। श्रीमती सुलता देव, श्रीमती सुलता देव प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 में बोलने के लिए मौका दिया। मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ। जैव विविधता की जब बात आती है तो मैं पहले मेरे उड़ीसा के बारे में बोलूँगी। भारत माँ और पृथ्वी माँ ने हमारे उड़ीसा को इतने अच्छे से दिया है, जो फ्लोरा और फोना है इतने अच्छे तरीके से नवाजा है, शायद ही किसी और स्टेट में देखने को मिलेगा। हमारे उड़ीसा में 37% फॉरेस्ट है। राज्य के जो भौगोलिक सीमा है उसमें से 37% है। उड़ीसा सेकेंड लार्जेस्ट नॉन टिम्बर प्रोडक्टिंग स्टेट है। 37 पॉपुलेशन जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि लीफ हो, सीड्स हो, फ्रूट्स हो, मशरूम्स हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो। रूरल एरिया में देखा जाए तो 40% इनकम जो जंगल जात फॉरेस्ट में से जो निकलता है उसी में से वो लोग अपना घर बार चलाते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सुरक्षा देने के लिए उड़ीसा में सरकार के द्वारा 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक नेशनल पार्क, एक प्रपोजल नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर पार्क रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व और 3 एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। प्राकृतिक सुरक्षा कवच के हिसाब से हमारे पास मैनग्रोव फॉरेस्ट है, सी वीड्स है, सी ग्रासेस है और काजू प्लांटेशन है जो हमको नेचुरल कैलामिटी से बचाता है। हमारे पास देखा जाए तो रेयर प्रजाति के हर्ससु क्रैब है, उड़ीसा कोस्ट में दिखाई देता है। इराविड डॉल्फिन है, चिलिका में दिखाई देता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो भितरकनिका में दिखाई देता है। मगर और घड़ियाल ये दोनों टिकरपड़ा में दिखाई देते हैं। चिलिका लागून जो एशिया का सबसे बड़ा ब्राकिस लेक है वो उड़ीसा में दिखाई देता है। रामसर साइट जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है वो उड़ीसा में है। अगर देखा जाए तो उड़ीसा में डाइवर्सिटी के लिए हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी देखेंगे तो कंधमाल में बहुत सारी प्रजाति की हल्दी है जिसको जीआई टैग का मान्यता मिला गया है। मिलेट जो है वो कोरापुट में है। अगर देखा जाए गजपति जिला को, वहाँ पर मक्का उत्पादन किया जाता है जिनका स्वतंत्र परिचय
नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में है। उड़ीसा में 15,000 प्रजाति का ट्रेडिशनल राइस होता है, जबकि 50,000 केवल सारे भारतवर्ष में से जो पाया जाता है उसमें से 15,000 हमारे पास होता है। अगर देखा जाए जो ये प्रजाति को संरक्षण करने के लिए हमारे वहाँ के जो एक कमला जी है, जिनको यहाँ पद्मश्री का उपाधि मिला था कि वो सबसे अच्छे सीड्स जो पैडी होते हैं वो उनको संभाल के रख पाते हैं। हम अगर देखा जाए हमारे जो ये जो बिल आया है, जिसको नागोया प्रोटोकॉल के हिसाब से भी देखा जा रहा है, अगर देखा जाए जो नागोया प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ये बिल तो 2002 में हुआ था, मगर इसको जब 2022 में इसको अमेंडमेंट के लिए दिया गया। मैं तो सरकार को भी शुक्रिया गुजार करूंगी, क्योंकि वहाँ जब बिल आया तो उसमें बहुत सारे लाकुनास थे, जिसके वजह से किसी स्टेट में भी प्रॉब्लम होता था। अगर देखा जाए स्टेक होल्डर्स को भी प्रॉब्लम होता था, देखा जाए रिसर्चरों की भी प्रॉब्लम होता था। मगर अगर देखा जाए तो इसमें ये बिल में इसको लेकर अमेंडमेंट होने जा रहा है, जिसके लिए ये बिल सभी लोगों के लिए सहज हो पाएगा, सरल हो पाएगा, जो लोग जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे देखा जाए तो भारत एक आयुर्वेद के हिसाब से जो मेडिसिनल प्लांट्स है, ये भारत में बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए तो भारत के मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उसको लेकर हम लोग जो रिसर्च करते हैं, पहले प्रॉब्लम होता था, अभी ये बिल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेडिसिनल वैल्यू होता है आयुर्वेदिक में, इसे किस तरह से किया जाएगा, किसे रिसर्च किया जाएगा, इसके ऊपर बहुत गुरुत्व दिया गया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का, जो हमारे पास में जितने सारे पेड़ पौधे हैं 5,000 से भी ज़्यादा है, उससे अगर देखा जाए तो 500 हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ऐसा बनाया गया है जो कंजर्वेशन करके मेडिसिनल प्लांट्स को रखा जाए। 8 ऐसा कंजर्वेशन एरिया बना गया है, शायद और कहीं है। ये बिल जो आ रहा है, हम जरूर चाहेंगे जो नागोया प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे जो चीज़ है उसमें होना चाहिए। और अगर देखा जाए ये प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लोग जो जनबसती में ये सब चीज़ें होती है, उन लोगों की वो जनबसती को इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। और एक छोटी सी बात कह के मैं अपना रखूंगी ये, क्योंकि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये हमारे पीढ़ियों के लिए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको संभाल के रखना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी को बहुत खतरा होता है अगर देखा जाए पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह से। काइंडली यहाँ पर मंत्री महोदय है, आप भी है, मैं गुजारिश करूँगी कि जो बायोडाइवर्सिटी बिल आया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल आया है, उसमें अगर देखा जाए तो जहाँ जड़ है जो प्लास्टिक का, उसको कैसे बंद किया जाए। हमारे ओडिया में एक कहावत है, मुड़ू मारिले जीव सरी देव को संगे किंपा कड़ी। जे अगर हम लोग जड़ तक पहुंच जाए तो ये खत्म हो जाएगा, हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो ये प्लानेट है ये बच जाएगा। नमस्कार सबको, मेरा थैंक यू। बंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। सुलता जी बहुत धन्यवाद। माननीय भुवनेश्वर कलिता जी। Thank you, sir, for giving me the opportunity. I'll be brief since we have to be brief. I will request all the speakers to be yes. brief. So, this bill was this bill is our commitment, India's commitment to the Convention on Biological Diversity of 1992. On the basis of this, the CBD recognizes countries to have the right to control their biological resources. So that keeping that in view, this National Biodiversity Bill was brought, and with the objectives like national in 3-tier. The Act establishes a 3-tier structure: National Biodiversity Authority, State Biodiversity Authority, and Biodiversity Management Committees. This Act of 1992 provides for sharing of benefits with
conservers of biodiversity and holders of creators of associated knowledge, benefits may be shared in various forms such as monetary compensation, sharing of intellectual property rights, and technology transfer. So the present bill, the Biological Diversity Amendment Bill 2021, has the highlights and objectives to encourage the Indian system of medicine and cultivation of wild medicinal plants. Sir, we are known for our the Indian system of medicine, and before the allopathic or any other form of medicines, this was the only answer to for treatment of people in general, and it was accepted in a large scale. The second thing is to decriminalize the offences, and the third, to encourage foreign investment in this sector, and to facilitate fast-tracking of processes for research, patent, application, and transfer of research results. So the key highlights that I want to place before you and the House is to access to biological resources and associated knowledge. This Act requires prior approval for or intimation to the regulatory authorities, that is National Biodiversity Authority and State Biodiversity Authority, based on the origin of the entity for obtaining biological resources occurring in India or associated knowledge. And number two, the exemption to Ayush practitioners. It seeks to exempt the Ayush practitioners and people accessing codified traditional knowledge, among others, from giving prior intimation to state biodiversity boards for accessing biological resources. There are many other important issues in this bill which should have, I think some other speakers will also mention about it, but I have some concerns in this bill, sir. So I will only deal with my concerns in this bill. Number one is lack of clear legislative guidance for determining the penalty, because the bill has spoken about the legislative guidance for the penalty. An adjudicating officer of the Joint Secretary rank of central government or Secretary rank of the state government will determine the penalty. That is where I have some of my concerns, which Honorable Minister, while replying, he will touch upon this. I will only highlight this, that the range of penalties is extensive, ranging from 1 lakh rupees to 1 crore rupees, with no specific instructions for the adjudicating officer on how to decide within this range. The bill does not differentiate penalties based on the type of offense. I appreciate the bill, I support the bill, but I will request the Honorable Minister to throw some more light on this. And the second point that I want to highlight here about, and which is my concern, is this bill replaces a judge as the adjudicating authority with a government official. A government will replace the judge. A government official will replace the judge. And the penalty decisions will be based on an inquiry rather than a judgment after open court arguments. The concern is whether giving such discretion to a government official is appropriate. That is my concern, sir. I understand, I support this bill, and I hope the Minister will throw more light on these issues. Thank you very much, sir. Thank you, Mani Bhuneswar Kelta ji. Honorable Ajodhya Rami Reddy ji. Namaskar, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on the Biological Diversity Amendment Bill 2021. Sir, the objective of this bill is to seek to amend the Biological Diversity Act 2002 in order to fulfill Indian obligations
under the Convention of Biological Diversity and Nagoya Protocol. The key features of this bill are it reduces the pressure on wild medicinal plants by encouraging the cultivation of medicinal plants. It exempts Ayush practitioners from intimating biodiversity boards for accessing biological resources. It facilitates fast tracking of research. It aims to bring more foreign investments. It seeks to regulate who can access biological resources. The bill has also clarified and strengthened the role of state biodiversity boards. It has changed certain criminal offences related to these violations on access to biological resources and benefit sharing with the community. So these are all very good features, sir. And some of the positives also of this act. The earlier act imposed a heavy compliance burden and made it hard to conduct collaborative research and investments. This bill addressed these problems. The amendments provided for access and benefit sharing of traditional knowledge to Ayush practitioners is addressed in this bill. This would help in promoting further research in this sector. The bill also amends the Act to include references to the Nagoya Protocol regarding the access and benefit sharing. Thus, I congratulate the government on taking us further in our commitment to the growth of biodiversity through this bill. Sir, I have few problems, which this bill need to be looked into. One of the issue is the bill amends the previous act to required to be taken, the approvals for benefit sharing should be in accordance with mutually agreed terms between the applicant and the concerned Biodiversity Management Committee represented by NBA. So actually, ideally, this process should include the applicant, concerned local bodies, and benefit claimers. So I want the minister to take note of this and look into it. Also on the penalties, the bill decriminalizes offences as per the initial act and replaces them with penalties. It raises the question of whether such power should be given to the government officials instead of judiciary. That's another issue. Then the negative impact on Indian industry also need to be looked into because it has to control the exploitation of Indian bioresources by foreigners. There are concerns regarding proposed exemptions. The modifications made under the bill exempt Ayush manufacturing companies from getting the approvals from NBA. So a joint parliamentary committee constituted to analyze the bill raised in the matter for proposed exemptions, opening the law for abuse. So it was unclear if companies had even paid communities despite commitments. Thus, the role of NBA should be clearly stated to prevent such incidents. With climate change escalations endangering our biodiversity, I would like to emphasize that we need a cohesive and coordinated approach between the international obligation as part of CBD and all related union ministries to effectively protect and promote our biodiversity and its benefit. In this regard, I urge the Centre to address these problems, and with these suggestions, I support the bill. Thank you, sir. Thank you. Honorable G.K. Vasan. Honorable G.K. Vasan. Stand here on behalf of my party to support this bill, sir. The new bill is expected to shift its focus from the conservation and sustainable use of biodiversity to improving the use, access and sharing of bioresources, sir. The significance of this bill, sir, I would say, is expected to minimize the pressure on wild medicinal plants by promoting medicinal plant cultivation or ex situ conservation of medicinal plants, sir. I would like to thank the Honorable Minister, sir, for exempting local people and communities of the area, whites, hakims and registered Ayush practitioners from obtaining approval for accessing biological resources and their associated knowledge. This enables individuals who practice
traditional Indian medicine to continue their operation without having to seek permission from the National Biodiversity Authority. Further, sir, this will be expanding the scope and research of the Ayush, which is Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy centers, sir. Sir, the new bill expanded the administrative purview of NBA by adding ex officio members from various central government ministries. This is a remarkable development since this collaboration integrates biodiversity into national policy making, sir. To conclude, sir, I want to say a concern to the Honorable Minister. The main issue with the amendment bill is that corporate or international interest might exploit traditional medicine permits to utilize it for commercial reasons without sharing gains with biodiversity conservationists. I request our Honorable Minister to take care of the interest of our biodiversity conservationists. With this, I support the bill. Thank you, sir. Thank you, Honorable G.K. Vasan ji. Mani Ram ji. धन्यवाद माननीय कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया और साथ ही मैं अपनी पार्टी के मुखिया बहन जी को भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। माननीय बिल के बारे में मेरा ये कहना है, माननीय जब दुनिया के तमाम देश अपने अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए आगे आए तो रियो समिट में CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हमने साइन किया 1992 में और उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये बिल लेकर के आए और उसमें तमाम तरह के प्रावधान किए गए कि किस तरह से हमें बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। इनका पूरी तरह से दोहन नहीं होना चाहिए कि इन द फ्यूचर हमारे पास कोई भी इस तरह की बात बचे ही ना कि हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। उसको लेकर के ये बिल लेकर के आया और उसमें तमाम तरह के प्रावधान भी थे कि इसमें रिसर्च भी की जाएगी और इनका कमर्शियल यूज़ भी किया जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड स्तर तक कि हमें कोई भी हमारा जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी बनाई गई जो हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई होती। तो मान्यवर उन सब बातों को ध्यान में रख करके 2002 का बिल आया और उसके बाद अब माननीय मंत्री जी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लेकर के आए हैं। उन्हीं कुछ बातों में अमेंडमेंट करने के लिए जिसमें कुछ बातें तो डाउटफुल आती हैं कि पिछले वाले बिल में क्या कमियां थीं और इस बिल से क्या फ़ायदा होने वाला। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हम इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को देखें तो उस 1988 की जो पॉलिसी वो कहती है कि 33% जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम जब बायोलॉजिकल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो उस पर ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फॉरेस्ट है। आज की सिचुएशन ये है कि हमारे पास 21% जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट है, अगर सारी चीज़ को मिला लें 24% है। तो इसके मतलब है हमारे पास बहुत बड़ी बहुतायत में हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर हम इसमें कई सारी चीज़ों का प्रोविजन जो पहले था उनमें ढील देंगे तो इसके मतलब है कहीं ना कहीं से कमर्शियल यूज़ बहुत तेज़ी से होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनका कहीं से मतलब नहीं होगा कि हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स से हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या हमारे इन द फ्यूचर हमारे इकोसिस्टम में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो हो सकता है कि वो लोग बहुत तेज़ी से उसका दोहन करें और हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, क्योंकि उस वाले प्रावधान में एक क्रिमिनल का भी उसमें प्रावधान किया गया था। कोई भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दोहन करेगा, अगर लिमिट के आगे जाके करेगा तो उस पर क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। शायद इसमें अभी वो वर्ड हटा दिया गया है, क्रिमिनल नहीं होगा, उस पर पेनाल्टी कर दी जाएगी। इस तरह से कुछ सुनने को मिला, पढ़ने को मिला मान्यवर। तो भी तमाम और इसके साथ ही मान्यवर उस वाले बिल में यह भी था कि जो लोकल जो कम्युनिटीज़ थी जो इस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रही थी उनको भी रिवार्ड मिलेगा। माने कि इसमें तमाम तरह के ट्राइबल हमारे जो लोग हैं वो लोग जंगलों में रहते हैं, उसकी रिसोर्स अपने जो उसको रक्षा करते हैं, तो उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा, रिसोर्सेज का फ़ायदा मिलेगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर भी एक संशय बना हुआ कि ये क्या अभी जो कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी, फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब क्या वो वहाँ उनको लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को लेकर के भी एक डाउट मन में पैदा होता है।
तो मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि इन परियोजनाओं पर भी ध्यान दें कि इनका बहुत ज़्यादा स्तर पर दोहन ना होने पाए, कल को हमारे पास कुछ बचे ही ना, कि बायोलॉजिकल रिसोर्स के नाम पे सिर्फ बिल रह जाए और बायोलॉजिकल रिसोर्स खत्म हो जाए, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद माननीय राम जी। माननीय ब्रिजलाल जी, माननीय ब्रिजलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी डिटेल में बताया है, ऑब्जेक्टिव बताया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश 3 किस्म के क्लाइमेट में डिवाइडेड है। एक है जो 5000 to 7000 फीट में आता है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेट जोन, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन में 70% हमारे मेडिसिनल प्लांट इसी क्षेत्र में होते हैं, और 30% हैं वो टेम्परेट जोन में होते हैं, जिसमें हमारा पूरा हिमालयन रीजन है। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उसका बहुत दोहन हुआ है, अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ है, और जगहों पर हुआ है। तो ये जो बिल आया है इससे काफ़ी मदद मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हम कल्टिवेट करेंगे, हम वाइल्ड उस पर वनस्पतियाँ उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारी एक संस्था है CSIR के अंडर में काम करती है, उसका नाम है सीमैप। सीमैप जो है उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और उसके ब्रांचेज बेंगलुरु में हैं, हैदराबाद में है, उत्तराखंड में है, और लखनऊ में अक्सर जाता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। तो ये काफ़ी जड़ी बूटियाँ ये पैदा करते हैं, रिसर्च करते हैं, किसानों को बुलाकर ट्रेनिंग देते हैं, और किसान जाकर वहाँ ये जड़ी बूटियाँ पैदा करते हैं। तो इस तरह ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं समझता हूँ मंत्री जी को सीमैप जो है इसको और प्रोत्साहन दिया जाए, और जिससे हमारे किसान ये लोग जड़ी बूटियाँ ये पैदा करें। हिमालय की जड़ी बूटी महोदय कहना चाहता हूँ, एक जड़ी बूटी जो सबसे महंगी है, गोल्ड से भी महंगी है, दैट इज़ कॉल्ड कीड़ा जड़ी। वो आधा कीड़ा होता है, आधा फंगस होता है, और वो बड़ी ऊंचाई पर मिलता है। और इवन कीड़ा जड़ी का प्रोडक्शन पतंजलि ने शुरू किया, और झांसी जैसी गर्म जगह पर हमारे प्रदेश में हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक एयर कंडीशन बना करके और क्लाइमेट वो क्रिएट करके कीड़ा जड़ी वहाँ पैदा किया, वो सक्सेसफुल रहा। तो ये जो हमारा प्रयास है इसमें, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए किसानों को, और वो जो है तमाम हमारी जड़ी बूटियाँ जो हम वाइल्ड पर डिपेंड करते हैं, वो जो है जिससे वो हम पैदा करें। और ये जब हमारी जड़ी बूटियाँ होंगी तो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, सिद्धा मेडिसिन है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, इन तमाम जो हमारी पद्धतियां हैं, तभी इसको बढ़ावा मिलेगा, और ये मेडिसिन इलाज भी सस्ता होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो हमारे बुजुर्ग लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी करते रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बिल आया, इसमें तमाम ये प्रोविज़न है, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको बहुत जानकारी है, और ये जो जड़ी बूटियाँ पैदा हों तो हमें मार्केटिंग की व्यवस्था है, हमारी सरकार ये पक्का व्यवस्था करेगी, क्योंकि हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर चलते हैं कि जो अंतिम सीढ़ी पर है उसका फायदा हो, आदिवासी है। तो ये जो जड़ी बूटियाँ लोग किसान पैदा करें, हमारी सरकार ये जरूर व्यवस्था करेगी कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, वो उनमें उत्साह आए, और जड़ी बूटियाँ पैदा करके देश को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद सर, मैं इस बिल का समर्थन। धन्यवाद माननीय ब्रिजलाल जी। माननीय विजय साई रेड्डी जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, before they say Dhanyavad, I will conclude it in 2 minutes, sir. Please. Sir, I, on behalf of my You are party, always brief and to the point. Sir, Vijay Sai Reddy. I raise to support the bill, sir. Sir, one of the objectives of this bill is to simplify the patent application procedure. Sir, but it has been flagged repeatedly, then is the lack of coordination between the Patent Office and National Biodiversity Authority, sir. And Honorable Minister, I would like to bring it to his notice also, sir. NBA is an autonomous body, works under the Ministry of Environment and Forest, Bhupendra Yadav ji, sir. Sir, while the Patent Office operates under the control of Ministry of Commerce and Industry. Sir, the two agencies function independently
of each other, and there is, I don't say that there is no coordination, there is no linkage between the two, sir. Sir, as a result, the applicants who have filed, who files the application, they keep going back and then forth between the two forums, and then getting the things delayed, sir. Sir, additionally, there is no data available as to how many biodiversity patents have been approved by NBA and granted by patent office. Sir, the next point and the last point, sir. Sir, India accounts for 7 to 8% of the world's recorded species and home to 96,000 species of animals, sir, and 47,000 species of plants. Sir, I am a plant lover and also animal lover, sir, for the information of our minister, sir. And I have my own animal husbandry thing, sir, and nearly half of the world's aquatic plants, sir. Sir, India has 4 of 34 global biodiversity hotspots, and now we have completely lost them, sir. And I request the Honorable Minister to restore them immediately. In the state, sir, in my state, Andhra Pradesh, we have centuries-old systems of indigenous plants to heal the diseases, particularly West Godavari district, Lankamalleswara Wildlife Sanctuary, Simhachalam Hills, and then several other, that is Tirumala Hill, and several other regions are home for this plant, sir. Sir, despite the vast biodiversity of our country, a meager 7 crore is spent annually towards this biodiversity conservation in the entire country. I request the Honorable Minister to increase the budgetary grant and spend more on this to, for future generations to know and to preserve our valuable biodiversity, sir. Thank you very much, sir. Thank you. माननीय मंत्री जी का जवाब. Thank you very much, sir, to providing me opportunity to speak on this subject. First of all, I thanks to all the members who have patiently stayed for a long time to discuss on this subject. I want to thanks Surita Devji, Bhuvanesh Kalita ji, Ayodhya Rami Reddy ji, Vasan ji, Shri Ram ji, Brajlal ji and V.S. Reddy ji for their contribution in this debate. Honorable Sir, we know that the India being a party to the Convention of Biological Diversity adopted in 1992, and after that the Earth Summit enacted and Biological Diversity Act 2002 was implemented by the government for achieving the mainly 3 objects. First, conservation of biological diversity. Second, sustainable use of its component. And third, fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of biological resources. And we are continue working on that. Then the question is, why this amendment and what is the purpose of amendment in the present act? As we know that we are having a 3-tier level system to protection of the biological diversity. At the national level, we are having a National Biodiversity Authority. At state level, we are having a State Biodiversity Authority. And the local level, we are having a Biodiversity Management Committee. The present act provides a mechanism for assessing of biological and genetic resources and sharing of benefits in fair and equitable manner arising therefrom with Biodiversity Management Committee and benefit claimers. With this present amendment, I think that we are providing more mechanism, especially to our tribal people or local people. They have a vast knowledge of this tradition, and especially we want to promote Ayush and Ayurveda. And for that purpose, we amend this present Biological Diversity Act to achieve this object. That's the reason with this present amendment, we are simplifying and streamline the reduced complaint burden and encourage conducive environment for collaborative and research and investment. That is the first object. Second is simplify the patent application process. And patent is not only for the biodiversity, the other also. Tomorrow engineering people say our patent, you create our patent office.
Tomorrow others, the science and the chemistry, they say you create our patent office. So patent authority is one. Those who are in this field also, they are also apply in the patent office, but how we simplify the system. That is the object. And the third thing is widen the scope of levying access and benefit sharing with local community. That is the main object, and to further conservation of biological resources. And that's the reason with the present amendment and after talking with the stakeholders or concerned person, the present amendment aims to reduce the pressure on wild medicinal plant by encouraging cultivation of medicinal plants and removing the ABS compliance burden on the Indian industries. That is the first thing. Second thing, exemption of codified traditional knowledge from the purview of the Act for Indian companies. So we want to promote more and more Indian companies, and we want to protect the traditional knowledge also. Third thing, prior to this amendment, there was a very difficulty to the Indian companies to clubbing with the international organization, academicians and researchers. And with this amendment, we are aligning the provision with the Companies Act 2013 with regard to the definition of Indian and foreign company for attaching more foreign investment in research and commercialization. It is also an object of this amendment to facilitate fast tracking of patent application process of Indian company without compromising the national interest and other international agreement where India is a party. Our also object of this amendment to decriminalize offences by opting for civil wrong in place of criminal offence in order to reduce the fear among the stakeholders for effective compliance. With this amendment, the state government unable to develop strategies and plans for conservation and sustainable use of biological diversity, enhance the flow of funds to the conservation of biodiversity, and simplified the administrative matter of the Biodiversity Management Committee operating at grassroots level. माननीय सभापति महोदय, अभी दो विषय यहाँ पर उठाए गए। पहला विषय जो हमने पावर दी है जॉइंट सेक्रेटरी को और इक्विवेलेंट अधिकारी को जो पावर दी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहीं भी जुडिशियल रिव्यू से अलग नहीं है। अगर आप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे सेक्शन 55(3) में, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई अगर पावर को गलत तरीके से उपयोग किया है तो फिर वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगी। सेम पावर इनकम टैक्स में और बाकी जगह अधिकारियों के पास रहती है। बाद में फिर अगर उसमें किसी प्रकार का कोई एरर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, तो वो एक जुडिशियल प्रोसेस हमने, और उसमें भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी अपीलेट अथॉरिटी का प्रोविजन हमने दिया है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय पर एक, चूंकि एक कमर्शियल विषय है, कमर्शियल विषय से हमें डीक्रिमिनलाइजेशन करने का उद्देश्य यह है कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बने। हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, अभी हमारी जो उड़ीसा से सुल्ता देव जी बता रही थी, उड़ीसा में हमारे पास सिमरीपाल, सतकोशी और बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास पूरा एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। तमिलनाडु में भी तिरुपति, आंध्रा में तिरुपति जी का तो पूरा वेंकटेश्वर का पूरा बायोडायवर्सिटी एरिया है। केरला में भी हम जाएंगे तो पूरा साइलेंट वैली का एरिया हमारा पूरा बायोडायवर्सिटी का बड़ा एरिया। अरुणाचल में जाएंगे तो पाके का हमारा बड़ा एरिया बायोडायवर्सिटी का एरिया है। अंडमान निकोबार में बायोडायवर्सिटी का एरिया है। अगर मध्य प्रदेश में भी आओगे तो पूरा जो सतपुड़ा की रेंज है वो हमारा बायोडायवर्सिटी का बड़ा एरिया है। उत्तराखंड में भी जाएंगे तो हमारी जो घाटी, फूलों वाली घाटी, हमारा एक बड़ा बायोडायवर्सिटी एरिया है। ऐसे एरियाज की हमने पहचान भी करी, लेकिन बायोडायवर्सिटी एरिया में ये होने के साथ साथ भी हमारे देश में मेडिसिनल प्लांट को घर में लगाने की, कल्टीवेटिंग करने की एक परंपरा रही है। आयुर्वेद हमारे यहाँ जीवन पद्धति और पूरा कोडिफाइड है। ये जो वर्मा जी अभी कह रहे थे ये ठीक नहीं है। हमारे पास पूरा कोडिफिकेशन है, हमारे पास सब वनस्पतियों का कोडिफिकेशन है। और मेरे मंत्रालय में और हमारे को इस देश पे गर्व है कि हमारे पास एनिमल और स्पीशीज़ की जो टेक्सोनॉमी है उसको लेकर के ZSI जैसा इंस्टीट्यूट है।
आप तो ये रेड्डी जी 96,000 बता रहे थे, ZSI के पास अभी उनके टैक्सोनॉमी में 1,06,000 स्पीशीज़ का टैक्स उनके पास अवेलेबल है, जितना हमारे टैक्सोनॉमी में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। और उसके साथ प्लांट के लिए भी हमारे पास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जिसको हम मिष्टी कह रहे हैं, मैंग्रोव सीशोर अलायंस फॉर इंटेंजिबल इनकम, और ये दुनिया भर में इसका सराहा गया। और अकेले हमारे BSI के अभी मैंने देखा था मैंग्रोव्स की उन्होंने 500 किस्म की किस्मों की उनके पास टैक्सोनॉमी का रिकॉर्ड है। इसी के साथ इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत धरोहर कार्यक्रम शुरू किया। हमारी 75 रामसर साइट्स को हम लेकर के आए क्योंकि ये भी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा काम करती है। और इस समय जब 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो पिछले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात दी थी। तो हमने अपने बायोलॉजिकल जो NBA है, नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी की, उनको हमने टारगेट दिया कि ये जो लोकल मैनेजमेंट कमेटी बननी है, इसको भी आप मेरी लाइफ ऐप पे चलाओ। और लगभग 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा गांव में हमने इसको ऐप के ऊपर करा है। अभी हमारे मंत्रालय ने जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, मतलब नीम से लेकर के और जामुन से लेकर के, ये सब हमारे फल और हमारे पेड़ पौधे पर सबके अपने अपने मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। हमने इसके लिए पूरा एक लिटरेचर प्रकाशित किया है और हर गांव तक ये जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है इसको बनाने का काम किया है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जब हम अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ उसका संवर्धन, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज का संवर्धन, उसके द्वारा रोजगार को खड़ा करना और रोजगार के द्वारा भारत के ट्रेडिशनल ज्ञान के साथ दुनिया को जोड़ना, इसके लिए जो सामयिक आवश्यकताएं थी, उसके लिए हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में संशोधन लेकर के आए हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सभी स्टेक होल्डर से, राज्य सरकारों से, मंत्रालयों से व्यापक विमर्श किया। जनजाति मंत्रालय से हमने पूरी तरीके से व्यापक विमर्श किया, कैसे हमारे ट्राइबल्स को इस ट्रेडिशनल नॉलेज का फ़ायदा पहुँचे, उन प्रावधानों को हम इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। और इन सब प्रावधानों को लाने के बाद आज लोकसभा ने भी इसको स्वीकृत किया है। और हमारा ये मानना है कि कमेटी ने जिस विस्तार के साथ अपने सुझाव दिए, उसको भी सरकार ने पूरी तरीके से स्वीकार किया है। और ये बिल आज अपने एक संशोधित स्वरूप में भारत के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, हमारे ट्राइबल लोगों के एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोसीजर बनाने के लिए, डीक्रिमिनलाइजेशन को निकालने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को करने के लिए, और सबसे बड़ी जो पूरी दुनिया मानती है कि सस्टेनेबल यूज़ के लिए प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल मिशन लाइफ, उसको मजबूत करने के लिए अमृतकाल के भारत के लिए ये बायोडायवर्सिटी का कानून हम संशोधन के साथ लाए हैं। और भारत न केवल नगोया ट्रीटी का भागीदार है, बल्कि उसके साथ ही साथ पिछली बार जब मॉन्ट्रियल में कॉप हुई, कॉप 15 में, तो जो HE डिक्लेरेशन जो थे, उस HE डिक्लेरेशन के बाद भारत ने जो मॉन्ट्रियल कॉप हुई उसमें दुनिया के जो बायोडायवर्सिटी के लक्ष्य तय करने के लिए अपने पूरे योगदान को दिया। हम मल्टीलेटरल लेवल पर दुनिया के उस योगदान में कदम से कदम बनाकर चलने को तैयार है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत जो CBDR के दुनिया का प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मानते हुए अपने पर्यावरणीय सुरक्षा को करते हुए अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। उसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संशोधन हम लाए हैं। मैं सदन से आग्रह करूंगा, ये संशोधन जो देश के गरीबों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, हमारे आयुष के लिए, आयुर्वेद के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, रोजगार के लिए लेकर के आए हैं, ये संशोधन जो प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के विषयों को पूरा करने के लिए लाए हैं, ये संशोधन जो अमृत काल में भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज को दुनिया के सामने स्थापित करने में सक्षम करने के लिए लाए हैं, उसको पूर्ण सहमति के साथ पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। The question is that the Biological Diversity Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.
We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 43 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 43 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Bhupendra Yadav to move that the bill be passed. माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Honorable members, please. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 1st August 2023 passed 1. The Constitution Schedule Caste Order Amendment Bill 2023. 2. The Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023. And 3. The Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 2nd August 2023. क्या होंगे प्रश्न?